Hello and welcome on my channel Visual Studio. So in my previous video we have seen all the theoretical concepts of MySQL, and now I'm beginning with the MySQL interface. So before that, some of the students was asking the steps of installation of MySQL. So I thought let me to begin from here so that nobody face the problem how to install it. So you download the MySQL, the link I will give on the description. And even if you want, you can type www.mysql.org. From there, download section, you can download the MySQL. And this is when you start installation, please note down the steps. These are the steps which you have to follow. Okay. Right. So let's begin. हम चालू करते हैं यहाँ से. This is the first. When you will start installing, this will be the first setup wizard. Okay, here in this window you have to click on next, and after that accept the license agreement term. Okay, you need to accept the license term. I'll highlight it wherever it is possible. After that, selecting the terms and condition, you have to select typical only. Click on next. Then you need to click on install. Simple. In the next window, you have to click on install. Right. After clicking on install, it will take maybe a minute or 1.5 minutes maximum, depending on the speed of your computer. Then again you have to click on next, and the finally installation will begin. Again next, nothing to do. Yeah, so then the installation will be reach up to this window. Now children, here you have to pay attention. Make sure this checkbox should remain selected, because after installation से केवल काम नहीं बनेगा. You need to configure it. So by default, click on it always remain checked, but make sure it the checkbox should remain on, and you click on finish, and immediately the configuration wizard will open. Is writing welcome to MySQL server instance configuration wizard. So this will be available to you. After this, you have to select the standard configuration. Okay, you have to select the standard configuration. Standard configuration, then click on next. After clicking on next, you have to nothing to do in this window, simply click on next. And now this is the important factor where you have to pay attention. Here it is asking modify security setting or create anonymous account. Here you can give password. You can also provide the password if you require, and I'll tell you the default password is just a minute. If you want, the default password is tiger in a small case, right? This is the here it is written current root password, so this is tiger. So if you want, you write it and give the new password as you want, whatever. If you don't want, then the best option is click on
anonymous account. Remove the modify security settings. Click on anonymous account, and after clicking on click on next, and then you will find a button execute. Then you find the button execute, and when you will execute all these four, the radio button will be highlighted, and you will be ready with your MySQL. Hope you understand. So these are the steps of installation. You can follow these steps and get it installed, because we are not left with much of time. Everybody should install and start coding along with me, so that you can be very much comfortable with the MySQL. So after installation, you will find this window, the black window. Okay, and at the right left top corner, you can see is asking enter password. So if you have checked the anonymous account, then no need to give the password. You will press simply enter and the window will start. And but in case I have given the password, so this is my password, and now where the cursor is blinking now, this area, this is known as the, I'm typing here simply for MySQL prompt. The cursor is known as the prompt. This complete is known as the MySQL prompt, where you are currently residing. Okay. Now, again, the very important part. See, you need to paste these MySQL screenshots in your files, practical files, project file. So sometime with the black background and white text creates the printing issue. So you can change the colors also. So what you have to do, click on this title bar. See at the top, I hope my cursor is visible to all. यहाँ पे right click आप करेंगे, not left, right click and go to the properties. आपको जाना, and in the properties, see the different tabs are there. Colors में आप चले जाए. Okay, colors. देखिए स्क्रीन टेक्स्ट को आप क्या करेंगे, ब्लैक कर देंगे, एंड स्क्रीन बैकग्राउंड सेलेक्ट वाइट, ऑफ वाइट कर लेने से अच्छा लगता है, ऑफ वाइट. ठीक है, ये आपके सामने प्रीव्यू दिख रहा है, एंड रेस्ट नो नीड टू चेंज एनीथिंग, ओपेसिटी एंड ऑल. एंड इफ यू वांट टू चेंज फॉन्ट साइज, छोटा लग रहा है देखने में, यू वांट टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज, 24 का रखना है. ओके, सी, so this is you can see it has been changed, and the color also. कई बार ये कलर इंप्लीमेंट नहीं होता है, तो आप इसे क्लोज करके और एक बार और ओपन कर लें, तो आपको ये कलर, yes, now you can see the SQL screen color has been changed. Okay, yeah, so now background is white, off white, and font color is black. ना इस स्क्रीन का अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, फाइल में डालते हैं, तो उसका प्रिंट क्लियर आता है. तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड, बहुत सारे कलर ऑप्शंस हैं, बट फाइल के लिए अगर आप इस टेक्सचर को रखेंगे, सो इट विल बी नाइसली प्रेजेंटेबल ऑन द फाइल. ओके, इस विंडो को खुलने के बाद सबसे पहला काम क्या है? देखिए बहुत बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, इसलिए इन पॉइंट्स को समझना जरूरी है. सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है एक डेटाबेस क्रिएट करना. क्रिएटिंग डेटाबेस फिलहाल आप ऐसे समझ सकते हैं, इट इज जस्ट लाइक क्रिएटिंग अ फोल्डर. हम एक बार फोल्डर क्रिएट करते हैं और
जो भी फाइल में हमें सेव करनी होती है उसमें सेव करते हैं अगेन एंड अगेन, हम फोल्डर बार बार क्रिएट नहीं करते. So similarly we will create data type once and then every time we will open that database. So this is a command, children, note down to create a database. Create database. MySQL की सबसे अच्छी बात यह है कि इट इज नॉट केस सेंसिटिव. आप कमांड को कैपिटल लेटर्स में, स्मॉल लेटर्स में या मिक्स करके सेंटेंस केस में, in any way you can type it, you can execute, it will display the same out. तो मैंने डेटाबेस बनाया, सपोज कीजिए डेटा, और मैं नाम देता हूं सर्विस माई इन्फो. आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, आप अपना नाम भी दे सकते हैं माई इन्फो नाम से. एंड इन एसक्यूएल एवरी कमांड विल बी टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन. ये आप आदत बना लीजिए, हर एक कमांड माई एसक्यूएल में टर्मिनेट होगी सेमीकोलन से. प्रेजेंट, ये देखिए, वन रो अफेक्टेड, क्वेरी ओके. तो डेटाबेस बन गया. देखिए अब मैंने कई सारे डेटाबेस बनाए हैं. अगर मुझे लिस्ट चेक करनी है डेटाबेस की तो मेरे पास कमांड है शो डेटा बेसिस. तो अगर मैं देखना चाहता हूँ, ये देखो बच्चों, ये वो सारे डेटाबेस हैं जो हमने बनाए हैं. तो माई डेटा, माई इन्फो, माई एसक्यूएल, स्कूल टेस्ट, ये सारे डेटाबेस इसमें बने हैं. इंफॉर्मेशन स्कीमा डिफॉल्ट होता है. अब नाउ जो नेक्स्ट कमांड है, हमने डेटाबेस बना तो लिया है, नाउ वी वांट टू ओपन इट. सो दिस इज द कमांड टू ओपन डेटाबेस माई इन्फो. Okay, database chain. Right. Yes. तो चलिए अब चलते हैं उस टेबल पे जिसको हमने कल डिस्कस किया. होप माय स्क्रीन इज विजिबल. देखिए ये वो टेबल है जिस पे हमने कल काम किया था. एंड टुडे वी विल लर्न टू क्रिएट दिस टेबल. राइट, ये लीजिए. आई थिंक नाउ इट इज विजिबल मोर क्लियरली. फाइन. सो पहली कमांड हमने डेटाबेस क्रिएट किया. सेकंड कमांड हमने डेटाबेस को ओपन किया. नाउ टुडे वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट दिस टेबल. ओके, देखिए. सो लेट अस बिगिन. क्रिएट टेबल, और अब टेबल का नाम स्टूडेंट. टेबल का नाम स्टूडेंट. आई एम रिपीटिंग, दिस इज नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज. आप कैपिटल, आप स्मॉल कैसे भी टाइप कर सकते हो. क्रिएट टेबल स्टूडेंट. फर्स्ट कॉलम आईडी, डेटा टाइप इंटीजर. ठीक है, और हमने साइज क्या दिया है, वो. राइट. नेक्स्ट, नेम. नेम, डेटा टाइप क्या है, साइज 30, कॉमा. परसेंटेज. नेक्स्ट लाइन में आ गया परसेंटेज. डेटा टाइप डेसिमल.
व्हाट इज द साइज 5,2। मैंने आपको बताया था 5 टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स एंड 2 डेसिमल प्लेस। DOB, एक चीज याद रखनी है कि whenever you are defining a column name, it should not carry space and dot in between. And DOB का data type date. This was the command. देखिए जब मैं इसको फुल करता हूं तो आपकी कमांड प्रॉपरली एक पेज में विजिबल हो जाएगी आपको। ओके, दिस इज माय कमांड, क्रिएट टेबल स्टूडेंट ID name char 30 percentage decimal 5,2 DOB. If I press enter, see the command says query okay, 0 row affected. ठीक है, ओके। 0 रो अफेक्टेड मतलब अभी हमने इसमें कोई रो इंसर्ट नहीं करी। So if you want to see the structure of table, now children note down, this is the command to change the structure, to see the structure of table. DESC student. Describe, DESC stands for describe student table का नाम। ये देखिए, ये आपकी टेबल है और ये स्ट्रक्चर है। इन फील्ड्स का मतलब हम समझेंगे बाद की डिफॉल्ट एक्स्ट्रा। अभी हमने कोई प्राइमरी की नहीं बनाई है, सो वी विल अंडरस्टैंड कि डिफॉल्ट क्या होता है, एक्स्ट्रा क्या होता है, नल क्या होता है, ये हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल आप देखिए ये स्ट्रक्चर ऑफ टेबल वही है जो हमने बनाया है। तो अभी हमारे पास केवल टेबल का स्ट्रक्चर है, डेटा नहीं है। नाउ द नेक्स्ट कमांड इज टू इंसर्ट अ रो। ठीक है, चलिए तो देखिए फर्स्ट रो में दिस इज द कमांड इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू। ये लिखा था मैंने कल, वैल्यूज। पोस्ट वैल्यू क्या है, आईडी, और आईडी क्या है, एक इंटीजर है। सो इंटीजर में ये सिंगल कोट लगाना मैंडेटरी नहीं है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, तो मैंने छोड़ दिए। बट वेरेवर द कैर वेरकर एंड डेट डेटा टाइप होगा, वहां पे आपको सिंगल कोट या डबल कोट लगाना पड़ेगा। सो नेक्स्ट नेम इज रामलाल, आईडी 1001, नेम रामलाल, परसेंटेज 95.50, डेसिमल वैल्यू है, नंबर वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है। आपको सिंगल कोट डबल कोट्स की जरूरत नहीं है, और ये भी आपके पास ऑप्शन है कि आप सिंगल कोट लगाएं या डबल लगाएं। डेट ऑफ बर्थ हियर इट विल बी रिक्वायर्ड 10 12। ओके, देखिए सीक्वेंस वही होना चाहिए जो है। नाउ आई एम गोइंग टू प्रेस एंटर। क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, अब आ गया। अर्लियर इट वाज 0 रो अफेक्टेड, नाउ 1 रो अफेक्टेड। ठीक है, अब चेक करें हमारी टेबल में इंसर्ट क्या हुआ है। So the command to view all the contents of table is this, select asterisk, asterisk को हम बोलते हैं all from EMP, sorry the table name is student। ये देखिए आपकी टेबल रेडी है with 1 row। So in this way you may insert n number of row as per the requirement।
इस तरह से MySQL में टेबल बनाई जाती है। ऑर्डर ऑफ एंट्री इज इमैटेरियल। आप किसी को भी पहले इंसर्ट कर सकते हैं। दोबारा से हम एक और रो को इंसर्ट करते हैं, देखिए। और सबसे अच्छी बात एसक्यूएल में क्या है कि ये केस सेंसिटिव नहीं। अब मैं नेक्स्ट कमांड को लोअर केस में इंसर्ट करूंगा, देखिए। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ओके, वैल्यूज। तो सेकंड आईडी मेरी थी 1002, नेम मैंने दिया था हर्ष, है ना। और हर्ष की परसेंटेज थी 85.57। और हर्ष की डेट ऑफ बर्थ थी 2004। कुछ भी दे दीजिए जो भी है, 12, 11। Okay, so the whole command is in the lower case, but there is no error. Query OK means my query is correctly executed. One row affected means we have done changes in one row. 0.01 second means this command take this much time to execute. If I want to see the content of table, देखिए टेबल दो रो के साथ आपके सामने। Got it, children? So in this way you have to insert all the rows. Am I clear? Good. So अब आप सबको क्या करना है, नेक्स्ट कमांड यहाँ तक ये सारा ध्यान रखना है, ठीक है। ज्यादा समय हम नहीं लगाएंगे इन चीजों में। We learn how to create a database. This is a command to open database. This is a command to create table, and this is a command to insert row. अब आप सब लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए इस टेबल को क्रिएट करना है। You people can take a screenshot. This is my already designed table. Okay, ये already designed table है। This table you will get in your book also. IP की बुक में, कंप्यूटर साइंस की बुक में मिल जाएगी आपको। नहीं है तो you can take a screenshot. How you will create this table, that syntax I am going to explain. But creating the table and inserting the row आप जरूर कर लें। And why this table only? Because this table is consisting all variety of data. So that is why हमने टेबल ली है, and all the queries we will practice on this table. SQL की जो बहुत सारी queries हैं वो हम इस टेबल पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए एट द बॉटम, दो दिस टेबल इज ऑलरेडी क्रिएटेड, बट मैं आपका इसका सिंटैक्स लिखता हूँ। सो यू विल राइट क्रिएट टेबल EMP। टेबल का नाम है EMP। सो द फर्स्ट कॉलम इज EMPN। इट्स डेटा टाइप इज इंटीजर। आप 6 का साइज दे दीजिए, वैसे 4 है तो 4 का साइज। ID है ename। द बेटर चॉइस ऑफ ename इज varchar because it saves memory space. I've given the size 30. Job, again the size is 30 because clerk, salesman,
जितनी भी वैल्यूज हैं ये सब अल्फाबेटिक वैल्यू। MGR, MGR इंटीजर न्यूमेरिक है। हायर डेट, द डेटा टाइप विल बी डेट। सैलरी डेसिमल, okay, you can give 6,2। कॉम, देखिए कॉम के अंदर आपको नल लिखा हुआ दिख रहा है और इसको कैर नहीं करना है। नल इज अ कीवर्ड वेयर देयर इज नो वैल्यू, वी राइट नल। इसको आपको कैर नहीं करना है। दिस इज अ डेसिमल वैल्यू, सॉरी डेसिमल, एंड विल गिव द सेम 6,2। इसका साइज थोड़ा सा बेटा इंक्रीज कर दो, 9 कर लीजिए, बिकॉज वी मे रिक्वायर टू एंटर अ लार्जर डिजिट। Okay, and at the end it's DEPTNO, integer size 4 is enough. This is the create table syntax for this table EMPL. I hope you understand int क्यों लिया मैंने EMPNO के लिए, because all the values are numeric. E name सब alphabetic values हैं, string values हैं, varchar, job varchar, MGR all the numeric data, hire date it's date, सैलरी सेल यानी कि सेल डेसिमल, नाइन टोटल नंबर ऑफ डिजिट विथ 2 डेसिमल प्लेसेस, कमीशन अगेन डेसिमल, डिपार्टमेंट नंबर इंटीजर। So this is when you will press enter, the structure of table will be created. लेकिन बेटा I have already created the table with the same name, तो मैं आपको चेक करवाने के लिए इस टेबल का नाम केवल EMP रख देता हूँ। Now there is some error. So what is the error? Let's check. Create table. See the decimal spelling गलत हो गया है, DECI, ये हमें ध्यान रखना होगा। There should not be any typographical error. Rest is okay. ये देखिए table EMP is created. Now I'll tell you how to insert first row, वो भी हम कर लेते हैं। Insert into EMP value, देखिए फर्स्ट क्या है, 8369 Smith. Okay, Smith is a clerk. Sequence of the data should be the same. 8902 it's MGR. The date of birth in 1990, 12/18. Okay, and salary is 800.00. Now commission is null, तो null को आपने कैपिटल्स में लिखना है बिकॉज एक कीवर्ड है। बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा केस सेंसिटिविटी ध्यान रखनी है बच्चों। This is case sensitive, and then the department number is in 20 integer value. Press column C. The first row has been inserted. You want to see the content, so you type select all from EM. Asterisk नहीं बोलना है यहाँ पे, EM. ये देखिए, my table is ready with the first row. So this is how you have to create this table. You can take a screenshot, और बेटा इस टेबल पे बेस्ड हम सारी क्वेरीज को करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, and from my next video we will start querying
So you all please install. You will get the link to download MySQL from the description of this table and start creating these tables. And that's all for the day. Thank you. Keep learning, keep growing.